While moving ahead, the Union Finance Ministry is addressing a press conference where the central government will likely announce another stimulus package amid the COVID-19 pandemic. Sitharaman said the economy is seeing strong recovery and COVID-19 active cases are declining. The measures are expected to be aimed at sectors worst hit by the pandemic and lockdown and will list out infrastructure projects which will be expedited to boost job creation. The announcement comes shortly after the Union Cabinet approved the production-linked incentive, that is PLI, scheme for 10 sectors on November 11th. Announcement. These are registered under the EPFO. They add new employees, and the employees will have to be at least 2 minimum if the reference base for the establishment is 50 employees or less, and minimum 5 employees, 5 new employees if the reference base for those establishment is more than 50 employees. Now these will have to happen between 1st October 2020 and it will be operational only till 30th June 2020. They will be covered for the next 2 years. How they will be covered, I'll cover in the next slide. But this is the criteria which is before us. EPFO के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, अगर वो नए एम्प्लॉयमेंट देती हैं तो उनको इसका लाभ मिल पाएगा। और इसका रेफरेंस जो है, जो हमने बेस एम्प्लॉयज का लेना है कि कब से लेना है, तो सितंबर 2020 को उसको लिया जाएगा। और किनको लाभ मिलेगा? मान लीजिए कोई संस्था जिसके 50 से कम एम्प्लॉय हैं, अगर वो 2 नए लोगों को, 2 से ज्यादा लोगों को नए रोजगार देती है और वो ईपीएफओ रजिस्टर होते हैं तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और जो संस्थाएं जिनके 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनको कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने पड़ेंगे ताकि वो इसको लाभ मिल पाए। और इसका जो दूसरा पक्ष ये भी है, जो ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उसको ही इसका लाभ मिलेगा, जो नहीं उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि उनके जो नए एम्प्लॉइज हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और ये योजना जो है ये 30 जून 2021 तक ये रहेगी ताकि उससे पहले लोग इसका लाभ उठा सकें। So we now move to talking about what exactly is the benefit which they are going to get. Central government will give the subsidy for 2 years in respect of the new eligible employees who are engaged on or after 1/10/2020 till, as I said, June of 2021, for those establishments which have up to 1,000 employees or less. Employees' contribution of 12% of the wages and employers' contribution of 12% of the wages, totaling 24% of the wages, will be borne by the central government. Now, when we are talking of employees, here we are talking of employees who have 15,000 or less as wages, not for all employees. Similarly, for those establishments which have more than 1,000 employees, only the employees' EPF contribution, which is 12%, will be 12% of the EPF wages will be borne by the union government. This subsidy support to get credited upfront in Aadhaar seeded EPFO accounts of eligible new employee. That's the only condition. We want it to be Aadhaar seeded. So that is the actual benefit that establishments will get if they create new jobs. इनमें किसको लाभ मिलेगा? और केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों के लिए जिनको लाभ देने वाली है उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जिस संस्था में 1000 से कम एम्प्लॉइज हैं, 1000 तक एम्प्लॉइज हैं, उनमें जो कर्मचारी है उसके हिस्से का 12% और काम देने वाले का भी 12%, ये कुल मिलाकर 24%, ये केंद्र सरकार उनके वेजेस का यानी कि भत्ते का 24% जो है
वो केंद्र सरकार योगदान देगी, 12% कर्मचारी का और 12% काम देने वाले का। ये 24% केंद्र सरकार उनका भत्ता देगी। जहां 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां पे केवल कर्मचारियों के हिस्से का जो 12% है वो केंद्र सरकार अपनी ओर से योगदान देगी। ये अगले 2 वर्ष तक जारी रहेगा ताकि और रोजगार इस देश में उत्पन्न हो और कर्मचारियों को भी इससे लाभ मिल सके और जो संस्थाएं हैं उन पर भी बोझ अगले 2 वर्ष तक कम पड़े। दूसरा, इसमें पात्र बनने के लिए आपको केवल आधार के साथ ईपीएफओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इतना ही आपको करना है, जिससे पारदर्शिता भी आएगी और सही व्यक्ति के खाते में पैसा भी जाएगा। The one factoid which I like to give about this is that those companies or establishments which are employing up to 1,000 people, 1,000 or less, probably will be 95% or slightly over 95% of all establishments which will get covered under this. And also, a rough estimate, subject to correction, a rough estimate is 65% of all those who are in the formal sector will be covered by this fact that this 12% and 12% will be borne by the government of India. 65% of all employees will get. जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, लगभग 95% संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी, लगभग सभी संगठित क्षेत्र के लोग इसमें लाभ उठा पाएंगे। और 65% की जो आंकड़ा अभी कहा है वो अपने आप में दिखाता है, दोनों ही आंकड़े बहुत बड़े हैं, किस तरह से देश के करोड़ों मजदूरों को इसमें लाभ मिलने वाला है, कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। We go to the second announcement. The emergency credit line guarantee scheme, which was announced in the Atmanirbhar 1.0, gets extended till 31st March 2021. You probably also were informed that from October it was extended till 30th November. Devashish is here, you can correct me. From October to, it was extended by 1 month to reach 30th November as the deadline for the EC LGS scheme. But now we are extending it up to 31st March 2021. The details of the scheme is very well known to you, but I'll repeat. It is fully guaranteed loan, it is collateral free loan, and it gives additional credit of 20% of your outstanding loans. And outstanding loans will be decided based on your balance as of 29th February 2020. And outstanding credit limit was about 50 crores.